driver. Like West Bengal is surging forward under the leadership of our Chief Minister, the center-state equation is being devastated. States with governments in the opposition parties are being denied their rightful dues. As we are experiencing in West Bengal, 7,000 crores of labor's money in the NREGA who have worked in the fields has been denied. The roof on top of the head through Awas Yojana of the poor people has been denied. So this is the government which is denied. The states being ruled by the opposition governments. Just a few days back, we saw vehicles and houses burning in Haryana. The whole country is burning, sir. Another double engine failure in Haryana. In Manipur, about 70 to 80,000 Central Armed Forces police have been deployed. But every second day there is more killing, more arson, more deaths, more rapes. This is war. It is a civil war, sir. And a government which cannot control a civil war has no business to remain in power. Is this a civil war or a war designed and manipulated from outside, wherein our Arunachal Pradesh is at stake, wherein Manipur is at stake, where is spreading to also Mizoram, where very close to Andaman Nicobar Islands, the Cocoa Islands. Try to understand, don't disturb what is happening in the Cocoa Islands. What is... Oh, he will not disturb me. Sit down, sit down. अरे बैठ जाइए आप भी बैठ जाइए हुजूरी जी बैठ जाइए kindly take your seat. Sir, Galwan Valley saw it. And my question is, whether the dispensation is ready to answer what is happening in the Cocoa Islands, near the Andaman Nicobar Islands. Who is doing it? Why the government is not taking any action? Is it because the government, Mizoram is following suit? One class of people are being thrown out of Mizoram. What force are we fighting against? How are the sophisticated M16 and AK-47 and grenades and self-loading rifles coming into the hands of the common man? The freely available weapons are going to move throughout the northeast India, and I fear they might find way into the West Bengal state also. So we have to be careful that this kind of arms, 6 lakhs of ammunition has been stolen from the police and the state armories. Was it in connivance? Was it in connivance with the state government? Is this an ethnic cleaning operation? Is this an ethnic cleaning operation? Is this an ethnic cleaning operation? What is the master plan? What is the master plan to counter which the Taliban project must be given a serious thought? Remember the Taliban project. More than 4,000 arms have been stated to be looted from the armory. Was that in connivance? Brother killing brother? Sisters being bloodied? I will quote. I will just quote. ये महान दृश्य है, ये चल रहा मनुष्य है, आंसू श्वेत रक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ. India alliance promises to be with democracy, to be with federalism, to be with respect towards the constitution. तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी. कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ. अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ. I quote Harivansh Rai Bachchan ji. Just remember those words. We in India make promise to stand by the tortured for peace.
I appeal to all mothers and sisters and quote here an honorable member who used to sit right here, but he's no more with us. I quote Mulanji when he said, "Ma behno hamla bol." I appeal to all mothers and sisters of this country. बलात्कारी पर हमला बोल, बेरहमी पर हमला बोल, हत्यारे पर हमला बोल, बेरहमी पर हमला बोल, बोल मेरी माँ हमला बोल, चालासू बोझ हमला बोल, बलात्कारी पर हमला बोल. माँ बहन, my mothers and sisters of this country, let your curse burn the tormentor. Mothers, be angry, be very, very angry. Let your eyes breathe fire and vanquish the tormentors, the rapists that this government has failed to punish. Is this being planned from outside our country? Why doesn't the government open their mouth? Why doesn't the government speak about Manipur? Why is the government giving a report card? This is not election time. Forget about the elections. Talk about Manipur. There's no confidence. There's no confidence is towards this government for the poor human development index. There's no confidence here. Let's This no confidence here is due to the increasing price rise. It is due to the increasing farmer suicide. It is due to the selling of the public sector undertakings. This no confidence here is for the divisive forces that is trying to destroy our country. It is trying to break the nations towards complete failure to protect the ethos that is India. Is this narco-terrorism that is happening in Manipur? Or, according to Archaeological Survey of India, some very precious metals have been found in the hills of Manipur. So is it to take the corporates right up to Manipur and hand over that precious metals to the corporates? Is the war because of that? I am quoting the Honorable Chief Minister when he said that in 2017, the poppy was grown on 1,853 acres. And today, as of today, 2022, poppy is being grown on 6,743 acres. With whose conditions? Who is supporting them? The Honorable Chief Minister himself has said that the problem is due to the illegal immigrants. Who are the illegal immigrants? Where are they coming from? Which countries are getting them? Which is the porous border through which they are coming? Why is the central government not closing that border? And we have to be careful that through that porous border, not only Manipur, rightly said by Honorable Member Gaurav Gogaiji yesterday, the total Northeast India is lying absolutely vulnerable to the forces that might walk right through. That is why the Kaladan project. All the 7 sisters, all the 7 states there are at danger. Why is the government not taking place? Arunachal Pradesh, half of it is gone. Leh, half of it is gone. Galan Valley, half of it is gone. Why is the government? Because you have taken help of terrorist groups during the elections that you're keeping quiet. And you're trying further elections to take help of the terrorist groups who are KRO. The people want to know. The people of India want to know. जो निगरानी हमें महफूज रखने के लिए होना चाहिए था, देश में वो निगरानी क्यों नहीं है? इस प्रश्न का जवाब सरकार को सत्ता पक्ष को देना चाहिए. What happened to the attack on the rifles? Who did it? Who engineered it? Such animosity and hatred is brewed among brothers that have lived together. This cannot be spontaneous, and the government has failed to control it. So we have no confidence on this government. Houses have been burned, mandirs burned, temples have been burned, 350 churches have burned. So, in the amber glow of the burning hearts, let us see light. Let us pass the no confidence motion towards this government now. Jai Hind, Jai Hind. Thank you. साथी निरंजना ज्योति जी. क्योंकि ये सरकार की मंत्रिपदों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है. एक मैं
देश के सामने स्पष्ट करना चाहती हूँ। मनरेगा से संबंधित यहाँ क्वेश्चन उठा है। देश के लिए एक रूल है, कोई भी राज्य हो, किसी राज्य के साथ हम पक्षपात नहीं करते। महोदय, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को अवगत कराना चाहती हूँ। पश्चिम बंगाल में मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ, मेरे मंत्रालय नहीं इनके अधिकारियों ने स्वीकार किया। हमने कहा उनके ऊपर जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मनरेगा इसलिए रोका गया है, मनरेगा को भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने देंगे। प्रधानमंत्री आवास को बंगला आवास करके दिया गया, हम उसमें भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। हम देश के कोने में कहीं भी मनरेगा में लूट होगी, हम रोक लगाएंगे। पारदर्शिता से काम करें, हम देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती कली बोसी जी। I'd like to start with the quote of Baba Saheb Ambedkar. Let us not forget that this independence has thrown us on great responsibilities. By independence, we have lost the excuse of blaming the British for anything going wrong. In this case, I think it is often the Congress. If hereafter things go wrong, we will have nobody to blame except ourselves. Shall I rise to support this no confidence motion brought by India and by Gaurav Gogoi on behalf of the India team and my party, the DMK. So the first time in India, the judiciary had to intervene to protect a state. Isn't it shameful? Sir, the government proudly says in Manipur, it is a double-engine government because it is a BJP government in the union and it's a BJP government in the state. But this double engine has become a double-edged weapon against the people of Manipur. A double disaster, a double breakdown. The PM, after returning from his trips abroad, chooses to speak to the media in a very rare occurrence outside the parliament. But he refuses to cross the threshold and come to parliament and speak with the fellow parliamentarians. A senior leader, Jaswant Sinha, day before yesterday in his article, had mentioned democracy is not defined by the beauty of its parliament building. It is dignified by the quality of its debates and the voice with which it speaks in unison on national issues. Today, India team is speaking in unison on national issues, and you refuse and you fail to come here and respond to it. Sir, 170 people have been killed, thousands injured, 60,000 displaced, 3,500 homes have been burned. People have been killed, as the Kakuli mentioned. People have been beheaded, raped on both sides. But when the Chief Minister of Manipur was asked, why have you not been able to control the situation for 3 months? The CM says, two brothers are fighting and the government is like a father mediating between them. Isn't this a shame? With the heavy security blanket the state has, the state of Manipur has the highest ratio of police personnel to civilians in India. 161 companies of central forces, including Assam Rifles, are present in Manipur, and yet the government has failed the people. The silence of the union government, the Prime Minister, and the inaction of the state government, which watched as houses burned, police armory was looted, and people killed each other. Women were being humiliated, stripped, paraded, raped, violated, and killed. This double agent stood hand in hand watching it all happening, saying, brothers are fighting. The videos of these two women who were paraded naked and raped shook the conscience of the nation and the world.
The 21-year-old girl's father and brother were killed when they were trying to protect her. So, when the mob caught this family, they ran to the police gypsy which was there. They begged them to take them in the gypsy to somewhere safe. But the policemen refused. When they got into the gypsy, they allowed the mob, the violent mob, to pull these two women out, and the father and the brother, out of the gypsy, and the policemen were watching in silence. When the father was killed and the brother was killed, and these two women were stripped. The state police, the National Women's Commission, and the State Women's Commission were all silently watching. Maybe they were wishing that this will miraculously vanish till the videos unfortunately went viral. And after many weeks and months, 5 or 6 people out of the mob were arrested. But time and again, these women were asking why no action was taken against these policemen who handed them over to the violent mob. But till yesterday, the government chose to keep silent and it did not respond. The people have been mentioning Draupadi in this house. नहीं, आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। नहीं नहीं, आप अपनी बात रखिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप करीब मुझे दे, आप अपनी बात रखिए। The other thing will not go into the record. Only Kanimoz's speech will be going in record. So the people have been mentioning Draupadi from Mahabharata in this house and how she was humiliated and stripped. So these women also must have prayed to some god to come and help them. God nor the government came to help these two women. And anybody who has read the Mahabharata properly knows that it is not the perpetrators of the crime who were punished, but the silent spectators who stood there like trees, watching her being humiliated were also punished. They will be punished like they will be punished when they were silent in Hathras, Kathua, Unnao, Hindustan, and when the wrestlers were protesting. The country, the nation, India, the mothers of India will punish them. So there are hundreds of relief camps. There are hundreds of relief camps, but there is no food, no water. It is overcrowded with no proper sanitation. The roofs are leaking and children have to live there. They cry out of fear and hunger. Is this what you call relief camps in this country? You don't even want to reach out to people who've lost everything, who had to walk for days to save their lives. You can't give them food, you can't give them protection, you can't ensure that the roofs don't leak. At Bishnupur, a woman said that people are saying my son has been killed, but I haven't seen his body. I refuse to believe that he has been killed. His best friend has told her that the son was killed, but she refuses to believe that he was killed because she lives in hope. She says, I hope that someday he'll come back alive to me. This is not just one mother who's saying this. There are brothers, fathers, families who wait, hoping that their loved ones are alive somewhere. Even if they're injured, they are there somewhere. A Methi girl in one of the camps asked me, you have come to see us, but why hasn't the chief minister or the prime minister bothered to come and visit us? We've lost our homes, families, livelihood. I will never go back to my home. I will never feel safe there.
the government has let me down. Why hasn't anybody come here to wipe my tears? But instead of listening to her pain and comforting her, the BJP fake news team manufactures a narrative saying that she told the India team that I have faith in the Prime Minister. Why have you come here? So, the truth is, whether it is the Kukis, Nagas, or Meiteis, we only saw despair and despondency in their eyes. I request the Prime Minister, this government, to reach out to these people and say that we care and justice will be done. Can't you do that much for people who've been hurt, who are bleeding? Sir, we went there to say India stands with you. We would like to know whether the government stands with them. The Chief Minister of Manipur has been blaming the Kukis and the Naga people for the drug there and the drug cultivation. But a former SP, Ms. Brinda, blames the Chief Minister's office and the Manipur government for it. There have been many stories in the newspapers earlier that the pesticides and fertilizers which are being sent to the state are diverted for poppy cultivation and not for food production. Shouldn't we find out the truth? Should not there be a proper inquiry into what has been really happening? You brought the Sengol to the new parliament with big pomp and show. You said it is Chola tradition. You don't know Tamil Nadu history properly. Have you heard about the Pandian Sengol? The Pandian Sengol which burned, which shattered when the king saved the common people. Do you know the story of Pandit? Please stop imposing Hindi on us and go read the Silappadigaram. It has a lot of lessons to teach you. संजय साहू जो है ना एक बार भेजा था वो 60,000 में आज तक It's okay, they're very scared of us. They don't want to see our faces also. They're happy with it as long as they can hear us. They cannot hear Manipur people, at least let them hear us. So this government is very lucky because it knows to manufacture one issue after another, one disaster after another. So we have to forget what happened a month ago and discuss something else, a new issue in Parliament today. Because we've not had the opportunity to discuss what happened in Balasore in Odisha. 3 trains collided and 288 passengers died and over 1,000 were injured. And there are bodies still lying in AIIMS, Bhubaneswar, which are unclaimed and not identified. But the report on the accident says lapses at various levels in signal and telecommunication department is responsible for the accident. And they've been warned, the government has been warned 2 months before the accident that there should be inquiry and the methods of shortcut being used for signal and telecommunication system in the country has to be looked into. Today, there are vacancy, operational safety categories. Vacancy is over 50,000 people have not been employed. Isn't this the fault of the government? What is your response to the accident? What is your response to the number of people who've lost their lives? This government fears disclosed accountability. It hides data or refuses to collect data. When data does not favor them, they sack the person in charge. The NFHS chairperson was suspended when he exposed the false claims of the union government. The minister, when she was speaking, said that it is, the minister Smriti Irani said India is 100% open defecation free. There is not one single state which is 100% open defecation free. It is a total lie. And when the person make sure that the truth comes to light, he was suspended. Sir,
8 से 10%. The employment तो आदमी 16,000 तक भी जा रहा है। data was withheld till the election results were out. And 2 people in the department, in the government resigned because of that. इसलिए The unemployment rate is 8.5% in this country. Investments have dropped. प्लस दूसरा चीज क्या है कि अभी It was 10.5%, 5% now. जो इंटरव्यू People are going back. More than 50% people are there in the agriculture sector. This doesn't happen in any developing nation. People are going back to agriculture हाँ because they have no hope. और There वहाँ is पे no क्या है मालूम space है सर for their लाख से नीचे हम लोग informal प्लेटिंग कर रहे employment. थे ना वो कॉलिंग भी चालू करवा दिया था 1.5 लाख रुपया 1.5 लाख से नीचे एक भी नहीं, उठाना ही नहीं. हाँ उसका सिस्टम And क्या the था national policy for rationalization of schools सिंपल has closed down thousands and thousands of बैठना schools. पूछना भी बेकार है कि And कैसे करवा millions of children have lost their opportunity to go back वहाँ to पे किसी school. और से 2 लाख डाल दिया बैठ जाइए आगे मोदी जी आप बैठ जाइए आगे चलिए कितना होगा बस खर्चा भी हमारा कम है उसमें मार्जिन ज्यादा है. मार्जिन ज्यादा हमारा है इसलिए देखो हर वजह की सब जो भी चल रहा है वैसे कहने मोदी जी आप अपनी बात रखिए We have taken note of it. We have taken note of it. आप बैठ जाइए कहने मोदी जी आप बोलना चाहती हो कहने मोदी जी आप आगे बोलिए क्या है आप शुरू कीजिए Sir, you have to give me extra time. Are you closing down schools because the क्योंकि 3 लाख only का the direct OBC, बच जाता है. SC, ST मतलब students उसमें क्या क्या हुआ in था government schools? कि In an 1 लाख reply रुपया वो क्या to the बोला हुआ था Rajya कि Sabha, बताते the हैं पूरा Union था Minister of State संजय has राउत stated that 1 लाख रुपया आगे देना 25,993 students belonging to 1 लाख SC, के ST, इंसेंटिव जो OBC देगा 50,000 के have dropped out of central universities. Is this the India you're talking about? Is this the Bharat you probably talk about where students from अच्छा, वो जो different incentive communities देता था, 50,000 cannot में go देता था. national पे incentive नहीं देता था. central government institutions and contract study there वाला है तो because of contract. discrimination? अगर हम उसको काम पे दे ऐसे वो हमने बैठने पे हमें था वो We were तब बोले थे given बैठ time बोला and again. 1 लाख से नीचे में उठाएंगे We've been time and again threatened in this house उसके पास तो 50 with ED, we're going to jail. It is not only the opposition parties and the media which is being threatened by कि this हमारा government. लाख रुपया तो मिलता था हमारा क्यों काम. The government creates a framework that exposes its own people to अब तो हमारी conditions तरह of ईमानदार भी होते freedom हैं. and सही forces बता, them to मेरे stay बच्चे भी brutality कहने का ईमानदारी होता between था. 2014 to 2020. kindly conclude madam kindly conclude 7,000 people have been charged with sedition charges. And most of that 7,000 लंच के and लिए most of जाकर them के ना are मतलब below the देश age की of सी फील हो रही थी किस तरीके से वो लंच Is it this a shame? तो सर 15,000 वाली वो And sir, the Prime Minister, नहीं ये होता है इवेंट्स में और differently दूसरा able है कि people मतलब उसके and बाद हम Divyang. ले रहे हैं उसका बोले कि But यहाँ पे बहुत the pension कितना which रश you हो गया give them per हम आपको month भिजवा is rupees 300, which is equal to 1 kilo of tomato in इसमें Ramadan. ये है कि सर अगला हजार वही मैंने उसको भी बोला मैंने कहा सर उसमें आपने कितने Sir, it is not only the prices which run in this government. It is crimes against women, which is risen to 26.3% in the past few years in the BJP government. लाइट का टॉपिक Sir, this is
a क्या government बोलेगा which मालूम है, सबका is एक ही है। indifferent तो जवाब देकर चुप and its जिससे कल इतनी बहस हुई administration is indifferent तो to people. बोला and कि they उसने don't सही value प्लान कर रखा है ना people. कि ना ही सामने Do वाला they care होप में about the रहे, well-being अगर वो of the करेगा तो Indian हम उसे citizens? देंगे। But फिर अगर हम the किसी को हायर irony कर रहे हैं और is उसको that 20-25 हज़ार रुपए दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, nationalists और and उसे call us टारगेट भी दे रहे हैं कि हमारा anti-nationalists. Are 1.5 you लाख के 2 nationalists? क्लाइंट Do होने you चाहिए। care about this country? मतलब Do you काम care का भी कर about दो। people in Manipur, लाख women, the से children ऊपर there नहीं चाहिए, suffer हाँ। every day, लाख and से till ऊपर today टेक्नोलॉजी you देखो। haven't हाँ। been able to bring. Thank you very much. अभी क्या है, वही Kindly मैं conclude. You are अभी सिस्टम hardly Your time is over. कि You are जैसे मान लो hardly 50,000 से नीचे का क्लाइंट करने every का day. हाँ, India समझे? will teach you a 50,000 से lesson ऊपर very का soon. जितना हुआ Thank you. Thank you. Shri Namo Nageshwar Rao ji. हाँ जोर से बोलो ना। मतलब मैं सोच रही हूँ ना कि मैं एनालाइज तो करूँ। Okay, Namo Nageshwar ji. You tell me which rule you are raising. कोर्ट इस हिसाब से करो कि 50 से नीचे क्लोज नहीं करो। मिनिमम ऐसा कोई रूल नहीं है. Namo Nageshwar ji. So what You is shall starting small? 50 होता है और 50 से सपोज करो ऑपोजिशन कर दिया या 70 ठीक है तो 50 से कैसे माउंटेन ये क्या है ये बोला। Namo Nageshwar ji. आप अपनी बात रखिए. 50 Thank you, Chairman, for giving this 20,000 ऊपर opportunity गया to speak on 20,000 का 3% motion of होगा no confidence on incentive. behalf of BRS party, प्लस जैसे my leader, KCR Garu. का जैसे है। हालांकि उसके लिए सब हम अभी छोड़ता है तभी तो छोड़ के भागा नहीं इतना स्वतंत्र टाइट करके रखा होके हुआ है कि जान निकल जाए। इंडिपेंडेंस हो के अभी 75 years में हम लोग आ गए हैं. हाँ। 75 साल से अगर हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे कर रहा है, कैसे उठा रहा है, जो ऐसे जो उठ रहा है, कॉन्स्टिट्यूंसी का दिक्कत सब अपना अपना ऐसे उठ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी वाला बताता है. मगर जो देश का जब बात आता है तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 1 में जो लिखा है उसको जितना भी होगा, India, margin उस पे that is मिलेगा, Bharat, 3% मिलेगा। shall be a union of states. नया वाले फ्री ये आ जाए। स्पिरिट ऑफ द अगर 50 कॉन्स्टिट्यूशन से है. है तो 50 से मगर 75 साल होने का बाद भी आज के दिन में 900 इंडिया में डिफरेंट आग स्टेट्स है. चमक गई। और छोटा स्टेट से सर, बड़ा क्या स्टेट सर, है. गलत। स्टेट जो है ना आपको सपोर्ट कर रहे हैं. कुछ स्टेट जो है ना आपके लिए अपोज है. कोई नहीं सकता। मगर आप जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठने के वही बाद मैंने बोला सर की आंखें आप चमक गई, यहाँ से गलत है। इक्वली जो है ना देखना चाहिए. सही ढंग से देखना चाहिए. वो छोटा स्टेट हो बड़ा स्टेट हो आपको मतलब कर रहा हो आपको अपोजिशन हो मगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा ध्यान जो है ना पूरा देश को ऊपर होना चाहिए. सटीक। जब स्टेट्स का जो भी सेफ्टी सिक्योरिटी ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट में देखना चाहिए. अभी देश में क्या हो रहा है अभी जो स्टेट में स्पेशली हमारा जो स्टेट में अगर तेलंगाना में हम तो जरूर जो है ना मणिपुर का बात करेगा. अभी तेलंगाना में पिछले 9 साल से जो है ना हमारा केसीआर साहब जो है ना मुख्यमंत्री है. हमारा पार्टी जो है ना उधर गवर्नमेंट चला रहा है स्टेट में. सेंट्रल में आप लोग भी जो है ना 9 साल हो गए. 9 ईयर से आप लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट में इधर जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में है. मगर हमारा स्टेट में इतना अन्याय कर रहा है जो एपी आर नहीं है कम से कम ये तो है कि नहीं है। 2014 में ये फौज से जो एक्ट पास हुआ था वो एक्ट का अनुसार हमको जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी खपन से उधर जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाने का था. हमारा काजीपेट में कोच फैक्ट्री लगाने का था. कोच फैक्ट्री का जगह एक कोच फैक्ट्री लेके गया महाराष्ट्र, एक कोच फैक्ट्री लेके गया गुजरात. हमको जो है ना कोच फैक्ट्री नहीं दिया. वैगन रिपेयर का जो है वैगन शेड एक बना दिया. उसी तरह से आईआईएम देने का था हमको नहीं दिया. ट्राइबल यूनिवर्सिटी देने का वादा था एक्ट में वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है. मेडिकल कॉलेजेस पूरा देश में जो है ना सबको दे दिया. तेलंगाना को एक भी जो है मेडिकल कॉलेज दे दिया. कल हमारा दोस्त कोरोना दोस्त हमारा लोकसभा टीवी महीने में चाहिए, हमारा महीने में हमारा चाहिए ना सर हमें कि पूरे इवेंट तक का वेट निशिकांत दुबे साहब ने बोल रहा था उसका जो है ना कॉन्सेंसी में एम्स लगा हुआ है और उधर जो है ना मेडिकल कॉलेज लगा हुआ है. पर तेलंगाना में क्यों इस तरह से कर रहा है. तेलंगाना का लोग तेलंगाना देश में है. तेलंगाना भी पार्ट ऑफ इंडिया है मगर तेलंगाना के ऊपर आप लोग क्यों इस तरह से कर रहा है. और एक भी जो है ना मेडिकल कॉलेज नहीं दिया है.
सबसे ज्यादा या तो पुराना नवोदय जो कॉम्बिनेशन विद्यालय जो कॉलेज यहाँ को पर करता तो था ना, एक्ट का अनुसार उस हर डेटा एक पे स्टेट हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक डिस्ट्रिक्ट कॉम्बिनेशन का में जो सीट था हर एक डिस्ट्रिक्ट उस में डेटा पे, Why you are disturbing? Why you are disturbing him? क्योंकि इस पे तो Why would सबको you मालूम are हो गया है कि standing कितना आने वाला up? है। Take your seat. Take your seat. Why you are disturbing him? एक कंपनी में था बोला तो वहाँ नहीं गया, वहाँ पे खाली सिर्फ सरकारी कंपनी में डील करता है, बोला 10 लाख $15 सब अभी Not disturb him. Not disturb him. तो आप बोलो इनकी जगह. अभी गलत करो. अभी अभी चेयरमैन साहब डेट हम लोग नवोदय विद्यालय हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक्ट का अनुसार एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक नवोदय विद्यालय देंगे। पिछले 9 साल से एक भी जो है ना विद्यालय में नहीं दिया है। हमारा मुख्यमंत्री साहब चिट्ठी लिखा है, हम लोग भी चिट्ठी लिखा है, ये हाउस में कई दफा बात किया है, तब भी जो है ना एक स्कूल भी नहीं दिया है, एक नवोदय विद्यालय भी नहीं दिया है। उसी तरीके से अगर आप बोलने से हम लोग को पहले कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, ITR बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तेलंगाना को सैंक्शन हुआ था। आप लोग जो है ना जो सैंक्शन हुआ प्रोजेक्ट को निकाल दिया है, उसको कैंसिल कर दिया है। क्यों हम लोग का तरफ से इस तरह से कर रहा है, ये जो है ना बोलना पड़ेगा। बात बोलो तो जरूर जो है ना उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। अगर हमारा तेलंगाना का कुछ स्कीम्स तो आप कॉपी कर रहे हैं, अच्छा है। अगर तेलंगाना का इंडिया में सबसे पहले हर एक फार्मर के लिए, हर एक किसान के लिए, हर एक एकड़ के लिए 10,000 रुपया प्रति साल देता है। अगर उसको आप लोग कॉपी किया है, अच्छा है। किसान सम्मान निधि बोल के 6,000 रुपए दिया है, उसको हम लोग स्वागत करता है। कम से कम आप लोग तेलंगाना रूट को आप लोग जो है फॉलो किया है। उसी तरह से हम लोग का पिछली क्या किया, हर एक घर में जो है हम लोग फिल्टर वाटर देता है। और ये भी जो तेलंगाना का किसान का बेटा है, विलेजेस में जो है पैदा हुआ आदमी है। हम बचपन में देख रहे हैं तेलंगाना आने तक हमको पीने का पानी नहीं था, सिंचाई के लिए पानी नहीं था। जब गर्मी आता है तो मार्च से लेकर जुलाई तक जो है ना पीने का पानी नहीं था, कुछ गाँव जो है ना पानी के पास जाना पड़ता था। ये कंडीशन था तेलंगाना का। मगर हमारा नेता केसीआर साहब आने के बाद पूरा तेलंगाना में हर घर का जो है फिल्टर पानी दे दिया। उसको भी जो है ना आप लोग हमारा मिशन भगीरथ को नाम भी किया है, अच्छा है। आप लोग देश में हर घर का जो है पानी दे रहा है, हर घर जल का नाम से दे रहा है। वो दे भी अगर इसी पार्लियामेंट में हम लोग का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था, देश में कौन सा स्टेट है बड़ा स्टेट में हर घर का जल जो है ना दे रहा है। इसी आंसर जो है ना मंत्री साहब ने दिया है। इसमें तो एक ही स्टेट है जो बड़ा स्टेट में तेलंगाना है, पूरा हर घर में जो है ना जल दे रहा बोल के। हम लोग जो है ना ये करने के बाद पूरा देश में सब स्टेट्स के लिए आप लोग पैसा देता है, मगर हम हर घर जल जैसा मिशन काकतीय बनाया है। मिशन काकतीय का बाद हमारा जो है ना अब लोग का जो है नीति आयोग का रिकमेंडेशन water allowed yesterday also. Only 5 of the farmers cannot be allowed to agriculture. He also asked for the point of water, sir. Every time point of water is being given to the society में. How can it be? बोल देते फिर दोनों को स्पीकर्स डायरेक्शन इज फॉलो। वो ये कहता है सर, कोई मेंबर के हमारा कर रहे हैं तो मंत्री नहीं कोई मेंबर भी उसका सुधार कर सकते हैं। ये जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं सर, उस पे 86,000 करोड़ में ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में, ठीक है. कालेश्वरम प्रोजेक्ट में भारत सरकार ने 86,000 करोड़ रुपया, ठीक है, ये गलत बयानी कर रहे हैं। नमो नागेश्वर जी, एक जो है इंटर्नशिप है, एक जॉब वाले दोनों पे काम है। इंटर्नशिप जो करता है उसको भी सेम है। बस अंतर ये है कि जॉब वाला परमानेंट है। आप कितना why you are so much agitated? आधा घंटा लगेगा। अरे भैया इनको बोलिए तो आप कितने agitated होते हो? चेयरमैन साहब करता है तो दे सकते हैं। मिशन भगीरथ के लिए नीति आयोग ने रिकमेंड करके
वर्क फ्रॉम होम में देखो हमारे 24,000 रुपीज को रिकमेंड करके आपके पास भेजा इस पैसा देने के लिए। वर्क फ्रॉम जो 1 रुपया नहीं दिया है, क्या है ना, 1 रुपया नहीं दिया है। दे देता है। अगर पूरा देश में हर एक राज्य को हर जन का पैसा देता है, एजेंसी का तो हमारा जो है तेलंगाना में हम लोग जो है ना वो स्कीम, अगर हमारा जो है ना हर घर में जो है पानी देने का बाद तेलंगाना को 1 रुपये भी नहीं दिया है। उसी तरीके से आज के दिन में देश में 24 आवर्स पावर किसान लोग को फ्री देने का राज्य एक ही राष्ट्र है, वो तेलंगाना है। राज्य हमारा स्टेट जो है ना स्टेट में 24 आवर्स फ्री गारंटी देता है, और वो भी जो है ना आप लोग स्कीम लगा दीजिए पूरा देश में। अगर तेलंगाना में पावर नहीं जाएगा, अमेरिका में पावर कट हो सकता है, मगर तेलंगाना में कभी एक दिन के लिए भी पावर नहीं जाता है। जब हम लोग का तेलंगाना नहीं आएगा, उस टाइम में अंधकार में था तेलंगाना। तेलंगाना बनने के बाद हम लोग जो है अभी 18,600 मेगावाट का पावर प्लांट लगा दिया। इसका वजह से हम लोग आज के दिन में 8 घंटा पूरा 6 घंटा पैडी में देखे तो अभी पंजाब को क्रॉस करके नंबर 1 है। इस तरह से पूरा जो है ना जमीन का रेट भी जब तेलंगाना आने के बाद 2 लाख रुपए पर एकड़ था, अभी जो है 30 लाख रुपए हुआ है। बच्चे यहाँ पे वो बोल ही चुके हैं, ये आ जाते हैं, ये मजा। आप जो है चारों को तो कर दो, इसको जो जिस तरीके से मेरा ये सर फिर रात को सड़क पे मैं सो जाती हूँ, सो जाती हूँ। देखे तो आपका जो है जरूरत भी बहुत है। आप कितना वादा किया था, अगर लोगों को जो है ना बहुत वादा किया आप, अभी हमारा पर कैपिटा इंडिया में हम लोग नंबर 1 है। जब तेलंगाना आने के पहले हम लोग 10-12 में था रैंक में, अभी तेलंगाना आने के बाद वी आर पर कैपिटा में नंबर 1 है। 3,04,390 नंबर 1 है, बड़ा स्टेट में वी आर नंबर 1 है। और उसी तरीके से अगर करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं। अगर आपका सपोर्ट नहीं है तब भी हम लोग नंबर 1 है। आप लोग हम ये करना चाहते हैं, आप लोग इसी तरह से सबको सपोर्ट कर दीजिए। अगर उसी तरह से अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना बहुत एरियाज में फेल हो गया, अगर उसको जो है ना प्राइस है काफी जो है ना, अगर पेट्रोल का डीजल का प्राइस काफी बढ़ गया, उसी तरह से गैस सिलेंडर का प्राइस काफी बढ़ गया। उसी तरह से हर एक साल में 2 करोड़ का जॉब देने के लिए था, अभी 9th ईयर में आप लोग है 18 करोड़ का जॉब मिलने का था, मगर अभी अनएम्प्लॉयमेंट देश में बहुत है। इसका बारे में भी आप लोग जानना चाहिए। उसी तरीके से सर उसी तरीके से अभी जो अभी उसी तरह से अभी भी कम से कम तेलंगाना को भी जो है ठीक ढंग से देखे ऑनरेबल चेयरमैन साहब, कभी भी ना कांग्रेस है ना बीजेपी, ना इधर का है ना उधर का है। हम लोग अपना भारत राष्ट्र समिति बीआरएस का है। हम लोग देश का लोगों का साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब सब 1 2 मिनट सर, अभी सर बात करें सर अभी जिस तरह से सर जिस तरीके से जो है ना अभी मणिपुर में जिस तरह से हुआ है, ये हम लोग का कंट्री में इंडियन पीपल के लिए ये जो है ना बहुत शर्मिंदगी का है। आप लोग का सिर अभी झुकना पड़ रहा है पूरा विदेश में भी। ये बात हम किस लिए बोल रहा है, अगर यूरोपियन पार्लियामेंट में भी बोलेंगे सोल्यूशन जो है ना लगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सब एक मिनट अगर इसी तरह से थ्री जजेस का फॉरवर्ड जजेस का कमिटी भी डाला है। अभी आखिरी में चेयरमैन साहब हम एक बात बोलना चाहता है। 15 लोकसभा में वो दे देंगे, मतलब आप ये एक तो देरी और कॉम्प्लीट करेंगे। और इधर अपोजिशन लीडर फ्रेंडली बनने का फारूक अब्दुल्ला साहब ने बैठा, जब तक वैसा नहीं होगी तब उस टाइम में स्टोन पेंटिंग हुआ था कश्मीर में। ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है ना कि अभी क्या चिल्ड्रन जो ने कर हुआ अवार्ड पिच किया, हम लोग अपोजिशन पूरा डिमांड किया था। अगर थोड़ा सुष्मा जी के साथ हम लोग डिमांड करके हम लोग सब गवर्नमेंट को बोला पूरा डेलीगेशन को कश्मीर लेके जाइए। उसको बोलो कि सिर्फ ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेके गया था। 39 जो है ना ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेके गया था। जाएंगे कि मीडिया और उसका जो 3 दिन हम साथ में आएगा। कश्मीर में था, जम्मू में था, सब सेक्शन वाला से बात किया।
हमने क्या कॉन्फ्रेंस क्रिएट किया, कुछ ना कुछ फायदा तो हुआ है। उसी तरह से अभी भी मणिपुर के लिए यही काम प्रधानमंत्री जी करे तो अच्छा रहेगा। हम लोग प्रधानमंत्री से इसलिए बात कर रहे हैं, अब देश का प्रधानी का बात से एक शांत आ जाएगा। देश का प्रधानी का बात अगर सबके लिए तो रेस्पेक्टेबल बात रहेगा, उसी की वजह से हम लोग डिबेट किया, उसी की वजह से इमीडिएटली उधर जो मणिपुर का शांति लेके आने का जिम्मेदार जो है ये गवर्नमेंट है। थैंक यू चेयरमैन। डेजिग्नेशन लीड जनरेशन डाल देता बिजनेस डेवलपमेंट की जगह, तो छठ से क्या आया कि मेरा लीड जनरेशन नहीं है बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस तो मैं वो डेवलप ही नहीं किया। मैंने यही बात करके अटकाया When you take your देखो तुम तभी अब क्या करोगे? हाँ था He has already started. ना तो नहीं का कोई बेनिफिट करा तो किस स्पेस पे अगर कंपनी ही पॉकेट में कुछ जाएगा तो किसको देगी? और ऐसा तो नहीं मैंने अनमैनेज्ड ये लिखा तो है। से भी कहीं भी ऑपरेशन सैलरी जस्टिफिकेशन जो है ना नोटिस दिया, उसी की वजह से जो है ना अभी ये सब बात हुआ, जरूर जो है ना इसका लोक आंदोलन मोर्चन को सपोर्ट करें। ठीक है मतलब कुछ बताया ஸ்பீக்கர் சார், இங்க எனக்கு முன்னர் எதிர்க்கட்சி தரப்பில் இருந்து குறிப்பாக இந்திய அணியிலிருந்து பேசிய உறுப்பினர்கள் முன்வைத்த கருத்துக்களை என்னுடைய கருத்துக்களாகவும் நான் வெளிமொழிகிறேன். இந்த கடந்த 9 ஆண்டு கால இந்திய அனுபவம் என்பது ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பில் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள், குறிப்பாக ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் அதிகாரத்திற்கு வந்துவிட்டார்கள் என்பதை கடந்த 9 ஆண்டு கால நடைமுறை அனுபவம் நிரூபித்திருக்கிறது. எந்த ஒரு ஜனநாயக ரீதியான எதிர்ப்பையும் சகித்துக் கொள்ளுகிற மனப்போக்கே ஆளும் தரப்பில் இல்லை. அதற்கு 3 உதாரணங்களை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். காலையிலே ராகுல்ஜி அவர்கள் உரையாற்றினார்கள். அவர் என்ன பேசுகிறார் என்பதை கேட்டு பெரும்பான்மை இருக்கிறது, அமைச்சர் பதில் சொல்ல இருக்கிறார், அவற்றை எதிர்கொள்வதற்குரிய வாய்ப்பு இருந்தும் கூட அதை சகித்துக் கொள்ளாமல் இடையில் குறுக்கீடுகள் செய்வது என்பது ஆரோக்கியமான ஜனநாயகத்திற்கு அடையாளம் அல்ல. அதே மாதிரி டெல்லி அரசு மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கான அதிகாரத்தை பறிக்கிற சட்டத்தை அவசரமாக முன்மொழிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது ஜனநாயக அரசியலமைப்பு. இந்த ஜனநாயக அரசியலமைப்பில் மக்களின் சார்பில் அதிகாரம் செலுத்துவதற்கு தகுதியுள்ளவர்கள் அதிகாரத்துக்கு வந்திருக்கிறவர்கள் தான், மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் தான். அந்த மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்காமல் தட்டி பறித்தது என்பது ஜனநாயகத்தின் மீது ஆட்சியாளர்கள் அருவருப்படைகிறார்கள் என்பதை காட்டுகிறது. அதே மாதிரி இங்கே ஒரு 20ஆம் தேதியிலிருந்து ஒரே ஒரு கோரிக்கை தானே வைக்கப்பட்டது. ஏன் நாடாளுமன்றம் முடங்கியது? ஆட்சி தலைவர் யார்? பிரதமர் தான். ஆட்சியில் இருக்கிறவர்களுக்கு தலைமை ஏற்கிறவர் பிரதமர். அதற்கு வேண்டிய பொறுப்பு யாருக்கு? பிரதமருக்கு தான். பிரதமர் வர வேண்டும் என்ற ஜனநாயக ரீதியான கோரிக்கையை நிர்தாட்சியமாக முரட்டுத்தனமாக நிராகரித்ததுதான் இந்த அவை முடங்கியதற்கு காரணம். இது எதை காட்டுகிறது? ஜனநாயக ரீதியான பண்பு ஆட்சியாளர்களுக்கு இல்லை என்பது காட்டுகிறது. அதே போல அடுத்து நான் குறிப்பிட வருவது வாக்குறுதிகள். ஏன் இங்கே நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம்? வாக்குறுதி என்ன கொடுத்தார்கள்? வருடத்திற்கு 2 கோடி பேருக்கு வேலை என்று சொன்னார்கள் அல்லவா? இன்றைக்கு 9 வருடம் 18 கோடி பேருக்கு வேலை கொடுத்திருக்க வேண்டும். ஆனால் உண்மையில் நிலைமை என்ன? 5 கோடி பேர் வேலை இழந்து விட்டார்கள். புதிதாக வேலை கொடுப்பது அல்ல, 5 கோடி பேர் வேலை இழந்துள்ளார்கள். அதே மாதிரி MSME, இந்தியாவிலேயே அதிக வேலை வாய்ப்பு அளிப்பது MSME. அந்த MSME நிலைகுலைந்து கிடக்கிறது, நெருக்கடியில் இருக்கிறது. வேலை வாய்ப்பு அளிக்கிற நிறுவனங்கள் அழிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் யார் வளர்கிறார்கள்? கார்ப்பரேட் முதலாளிகள் வளர்கிறார்கள். அதானி அம்பானி வளர்ந்தால்தான்